So thank you very much, everyone. If you can switch on your video, it will be better. It will be more beautiful. Every Saturday, we do this program from the UPIF Forum, which is the Proutist Universal Forum, which we call Universal Proutist Intellectuals Federation. इनका ये ओपन फोरम है और जहां हम किसी एक विशिष्ट मुद्दे पर बात करते हैं और इसमें लोगों में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करते हैं जिससे कि एक स्वस्थ समाज का गठन हो सके। यही हम लोगों का उद्देश्य है। और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्राटा, दैट इज मानव जीवन का 3 स्तर है। एक भौतिक स्तर है, साइकिक स्तर है, मानसिक स्तर जिसको हम कहते हैं, और तीसरा आध्यात्मिक स्तर है। तो इस तरह से जीवन के कई स्तर हैं। थैंक यू पंकज बाबू फॉर ज्वाइनिंग एंड हरानंद दादा, सत्यनारायण जी, ज्ञानेश्वर प्रसाद जी एंड हमारे विजय राव दादा, थैंक यू सो मच। सो विल कंटिन्यू। सो हम लोग जानते हैं कि जैसे फिजिकल स्टेटम है, फिजिकल स्टेटम में भी कई स्तर हैं। जैसे वैज्ञानिक स्तर है, सोशल स्तर है, इकोनॉमिक लाइफ है, कल्चरल लाइफ है। एंड इसी तरह से जो हमारा सोशल लाइफ है, समाज है, इसमें हम सब जानते हैं कि विधायिका है, कार्यपालिका है, जुडिशियरी है, और समाज इन्हें चुनकर सबके भले के लिए नियम कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट या लोकसभा में भेजता है। इन्हें हम लीडर या नेता कहते हैं। तो क्या ये नेता हैं? आर दे लीडर्स? या खुद दलदल में फंसे हुए XYZ दल में लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं जो अपने को लीडर कहने का दावा करते हैं? हाउ टू जज योर लीडर, वी विल डिस्कस ऑन दैट एस्पेक्ट आल्सो। So these are the points we will discuss, जिसमें कि मेनली हम जानते हैं द कल्चरल लाइफ, विच इज जो आज हम समाज में देख रहे हैं, लगभग तार हो गया है। समाज कह के तो अपने घरों में ही और रिलेटिव्स में ही कुछ बचा है। और दूसरा है पॉलिटिकल लाइफ, तीसरा है इकोनॉमिक लाइफ। So today we know that because of the political and economic system has joined hands, and the culture is becoming, I think, like a sandwich in between. So that way we need to, and why I have chosen this is very important, that a year back almost we were celebrating what you call Amrit Mahotsav, and that August is going to come, 1 year past, and we had done so many promises from the Red Fort that we will be taking. The prime of them was that we will be taking our nation as a developed nation after maybe 25 years. And when we celebrate 100 years, that was the purpose. So I was thinking that why don't we keep some discussion that how India can be a developed country in spite of so many variations and inequalities prevailing today. So that was the reason, and that's why we kept this subject. So I will request आप लोगों से, अभी और लोग आएंगे, काफी लेट हो रहा है, so we should start. And I think can I request Dada Haranand ji, being a most senior member among us, to unmute and give us few go ahead lines so that we can start this program. Thank you, Dadaji. You are muted. Kindly unmute yourself. Thank you. Am I audible now? Yes, sir. Thank you. Thank you very much, Dadaji. Namaskar to everyone. How to develop this country in such a manner that in the next 20 years it becomes a developed country. Dada, I would like to know whether I should proceed with the same language or I should switch over to Hindi. No, Dada, any language, preferably Hindi or English or mix, as you wish. First of all, when we talk about India, we cannot view things in isolation. Yes. Because we live in Asia and Asia is there on the world map with other continents. तो सबसे पहली बात जो समझनी होगी बौद्धिक दृष्टि से कि हम जब इंडिपेंडेंट नहीं हैं और जब हम इंटरडिपेंडेंट हैं
दूसरे देशों पर आश्रित हैं, तो हमारा डेवलपमेंट जो है वो दूसरे देशों की और बाह्य परिस्थितियों पर भी आश्रित है। छोटी सी बात देख लें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के परिणाम कितने दूरगामी हो रहे हैं कि अभी रूस ने ब्लैक सी डील को कैंसिल किया है। अब ब्लैक सी डील में सब लोग जानते हैं कि अनाज जाता था यूक्रेन का बाहर, और इसमें यूनाइटेड नेशंस के सुपरविजन में और यूएसए के सुपरविजन में जाता था, और यूनाइटेड नेशंस इस अनाज को 79 कंट्रीज को के जरूरतमंद लोगों को बांटता था। तो अब एक देखिए, एक ये आपस की लड़ाई में कितनी बड़ी संख्या में गरीब देश वंचित हो गए यूक्रेन के अनाज से। फूड ग्रेन का वो सब ग्रेनरी है वर्ल्ड का, तो इसलिए, और एनर्जी फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम खड़ा हो गया। एनर्जी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो खड़ा था ही कि क्रूड की कीमतें भागती रह गईं, और हम लोगों ने फॉरेन पॉलिसी में निर्णय लिया कि भाई हम तो सस्ता लेंगे, रूस से लेंगे। तो ठीक है, रूस हमारा बहुत पुराना साथी रहा है, तो वो निर्णय देश के हित में ही था, इसमें कोई शक नहीं। तो पहली बात ये। दूसरी बात, जब हम ये डेवलप्ड कंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट है और ये नया कॉन्सेप्ट है, और बीच में फिर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ भी आया, डेवलप्ड और डेवलपिंग का। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का है। देखिए, ऐसा है कि दुनिया, हम खुद को घोषित कर दें कि हम विकसित देश हैं, इससे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि दुनिया जब हमें मानेगी कि हम विकास की सीढ़ी पे आगे बढ़ गए और विकसित देशों की श्रेणी में आ गए, तभी हमारी स्वीकार्यता है। अदरवाइज तो वही है कि अपनी पीठ थपथपाते रहिए। तो अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो अभी जो रिलीज हुआ था पिछले वर्ष, हम 132 पर हैं, 132 पे हैं, और नॉर्वे जैसे देश जो एक पर हैं। तो बहुत लंबा सफर है ये। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब बात आती है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात आती है, उसमें उसके पैरामीटर्स हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ है, शिक्षा बहुत अहम है। और ये बात तो है ही कि डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ तो वो है ही, इकोनॉमी का तो सब है ही। अब चलिए पहले इकोनॉमी से देखते हैं। तो इकोनॉमी के 3 बड़े एस्पेक्ट हैं: कृषि, इंडस्ट्री और ट्रेड, व्यापार। अब इसमें सभी जानते हैं, जो प्राउड जानते हैं कि इसमें एक संतुलन बना के चलना पड़ता है कि एग्रीकल्चर में अगर 30-40 से ज्यादा % लोग लग गए तो दूसरे सेक्टर्स प्रभावित होंगे। इंडस्ट्री की भी लिमिटेशन है, ट्रेड की भी वही लिमिटेशन, और सर्विस सेक्टर में 10% से ऐसा माना गया कि उससे ज्यादा लोग ना रहें। पर हिंदुस्तान में आज स्थिति अलग है। देखिए, ऐसा है कि विश्व में जो ये बड़े देश हैं जो सबसे ज्यादा फूड ग्रेन पैदा करते हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं, चीन, अमेरिका, ब्राजील और इंडिया भी करता है। अब इंडिया का फूड ग्रेन तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहीं पर रह जाता है और ज्यादा कुछ हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम अभी कुछ चीजें जरूर एक्सपोर्ट कर रहे हैं फूड ग्रेन्स में, पर हमारे यहाँ समस्या बनी हुई है फूड ग्रेन्स की। तो ये जो बड़े देश हैं, एक छोटा सा उदाहरण ले लें, चीन तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानती है दुनिया इसको, लेकिन विश्व का केवल 10% कृषि योग्य इनके पास इनकी भूमि है विश्व की, और विश्व का 25% फूड ग्रेन चीन पैदा करता है। और उसी तरह अमेरिका की ताकत यह है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि का और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि उसके सहारे है। अब ब्राजील की ताकत यह है कि गन्ना का इतना बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, और कच्ची चीनी का, तो सब अपने अपने हिसाब से। आप जानते हैं कि गेहूं की बहुत बड़ी फसल है अमेरिका की। तो हम अभी क्या है ना, हमारी कृषि इस अवस्था में है जो गांव के कुटीर उद्योग सब डूब गए। अब लोग या तो कृषि पर हैं या शहरों की ओर बढ़ गए। तो हम डगमगाती हुई स्थिति में, मानसून पर आश्रित हमारा सारा ये नजारा है। तो ये समय लगेगा हमें। और हमने, आप देख लें, 1952 की प्लानिंग से अब तक कृषि पर हमारा जो आवंटन रहा,
वो बहुत कम रहा। आप 2023 के ही बजट को देख लें एक उदाहरण के लिए, कि देखिए मतलब मुख्य रूप से जो अभी आवंटन करीब 60% हुआ है, वो या तो 30% जो हुआ है वो ट्रांसपोर्टेशन पे हुआ है, और 30% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हुआ है, सड़कें वगैरह। अभी भी कृषि को वो प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है जिसकी उसको आवश्यकता है। ठीक है, अब रहा ये कि ये अभी समस्या गहरी है, और जिस तरह जो विश्व के हम जब अपने को विकसित देश की श्रेणी में लाना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी का जिस तरह प्रयोग किया जा रहा है पूरे विश्व में, जो विकसित देशों की कृषि आप देखें तो वो देखने लायक है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी देखिए, जैसे हम लोग फ्रूट के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं विश्व में, इतनी लीची पैदा करते हैं, पर हमारा हमारा फ्रूट प्रोसेसिंग सिस्टम इतना कमजोर है कि आज भी चीनी लीची जो है विश्व के दूसरे देश ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना। तो हम अपने यहाँ जो फसलें हैं अलग अलग किस्म की, उनको हम संभाल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास या तो वो वैसे बड़ी तादाद में कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, फूड प्रोसेसिंग का अपना सिस्टम है, हर चीज का, कोई भी फूड को बचाने के लिए या फ्रूट को बचाने के लिए बहुत बहुत व्यवस्था करनी पड़े, तो उसके लिए खर्चा चाहिए, कैपिटल शुरू में तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो ये और मूलतः हम अभी विकास केंद्रित इस मानी में है कि सड़कें हम बना रहे हैं, और दूसरी बात डिफेंस का हमारा एक अलग प्रॉब्लम है कि हम पुराने मित्रों से जूझ रहे हैं, चीन और पाकिस्तान से, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा हर साल बढ़ता जा रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, देश की सुरक्षा का प्रश्न है, कोई समझौता भी नहीं हो सकता। तो अब ये फ्रंट रहा इकोनॉमिक फ्रंट, जो आई एम फ्लैगिंग द मेजर इश्यूज। ये तो बहुत लंबा विषय है, इसमें बहुत दूर तक जाया जा सकता है। अब एक बात रही कि मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास की, तो बाबा ने एक सिविलाइजेशन एंड साइंस और इसमें बड़े महत्वपूर्ण बात कही है कि देयर शुड बी हार्मोनाइजेशन ऑफ सिविलाइजेशन एंड साइंस इफ इंट्यूशनल साइंस हैज टू डेवलप। उन्होंने कहा है कि अगर आध्यात्मिक विकास होना है तो उसके लिए सभ्यता और विज्ञान के बीच सम्यक रूप से समन्वय होना चाहिए, समायोजित ढंग से चलने चाहिए। और उसमें उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर सभ्यता का विकास नहीं होगा, विज्ञान बहुत बढ़ गया तो समस्या, और अगर सभ्यता बहुत विकसित हो गई, विज्ञान पीछे रह गया तो भी पिछड़ गए। तो ये संतुलन जो है सभ्यता और विज्ञान का, यह निश्चित है कि हम विज्ञान के आविष्कारों के क्षेत्र में अभी हम बहुत पीछे हैं। और मुझे एक बात और कहनी पड़ेगी कि जो 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी औद्योगिक क्रांति का जो चौथा दौर है, तो हेनरिक वॉन शील ने, जो एक बहुत ही विश्व के प्रभावशाली स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, उन्होंने कहा कि ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, एनवायरमेंटल रेवोल्यूशन जो अभी चल रहा है, एनवायरमेंट रेवोल्यूशन विश्व में चारों ओर तहलका मचा हुआ है, COP28 होने जा रहा है, और G20 में भी इस मुद्दे को बहुत बड़ी संख्या में उठाया, क्लाइमेट फंड की बात हो रही, क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है। इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ये तो एक अलग मुद्दा है जो प्राउत इससे जुड़ा हुआ है काफी गंभीर रूप से। और क्वांटम रेवोल्यूशन, तो क्वांटम रेवोल्यूशन जो है ये एक आज नहीं शुरू हुआ है, जिस दिन 1956 में ट्रांजिस्टर आया उस दिन से ही क्वांटम रेवोल्यूशन शुरू हो गया, और जिसने ट्रांजिस्टर बनाया 1956 में उसको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का, और उसके बाद 1972 में जब लेजर आया तो उस व्यक्ति को दूसरा नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स का, हार्दिन को। तो ये है। और अब क्वांटम रेवोल्यूशन जो है बहुत आगे चला जा रहा है, और क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स, ये सारी चीजें जो हैं पूरी दुनिया की तस्वीर को बहुत जल्दी बदलने जा रही है। 5 वर्षों में ये टेक्नोलॉजी जो है, IoT और मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, रोबोटिक्स, तो ये सब मिलकर के दुनिया की तस्वीर बदल देंगे। अभी हम लोगों ने, आप सभी जानते होंगे कि अब देखिए छोटी सी बात लीजिए कि हार्ट कार्डियो प्रॉब्लम्स के लिए एंजियोग्राफी वगैरह लोग कराते थे, अभी गूगल ने कहा कि नहीं, हम तो रेटिना स्कैन करके बता देंगे कि इनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है कि नहीं, 5 वर्षों में इनको हार्ट अटैक होगा कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी इस तरह से भाग रही है कि हम कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अभी
जैसे इंडिया ने बहुत अग्रीमेंट अच्छे अच्छे किए हैं यूएसए से, जो अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे, और इस तरह की चीजें चल रही हैं। पर टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन नहीं हो पा रहा, हम उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगी टेक्नोलॉजी है कि हम खरीदने की ताकत नहीं रखते हैं। तो हम उसको ट्रांसफर करते हैं कि आओ मेरी मदद कर दो, हमारा कारखाना बैठा दो। ये शुरू से चल रहा है। हिंदुस्तान के स्टील कारखाने कभी रूस बैठाता था, न्यूक्लियर प्लांट भी आके रूस ने बैठाया। सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में कहाँ क्या हुआ, तो दूसरे देशों की मदद ली गई। इसलिए ये इंटरडिपेंडेंस की बात अच्छी तरह समझ लेनी पड़ेगी। हम अकेले चांद पर नहीं उतर सकते हैं, हमको सबको साथ लेके उतरना पड़ेगा। और विश्व के दूसरे देश जब तक मिलकर हमारी मदद नहीं करेंगे, हम ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसलिए ग्लोबल और सोसाइटी की जब बात कही बाबा ने, ग्लोबल पॉलिटी की बात कही कि विश्व में एक सरकार हो और एक नियमावली हो, इसीलिए कही कि अभी जैसे G20 में ये बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सुधार होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड का जो सिस्टम है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। लोग प्रोटेक्शनिज्म को अख्तियार कर रहे हैं और खुला व्यापार नहीं चल रहा है। और छोटे बेचारे जो विकसित देश हैं, वो जो अविकसित हैं या विकासशील देश हैं, उनके साथ ट्रेड के फ्रंट पे न्याय नहीं कर पा रहे हैं। अपना वो बैरियर लगा रहे हैं तरह तरह का, ताकि उनकी चीजें सुरक्षित रहें। तो ये जो आत्म सुरक्षा की लड़ाई चल रही है, ये बहुत घनीभूत रूप से चल रही है। तो इसीलिए ये सफर लंबा है, मुझे इतना ही कहना है। एक दूसरे को साथ लेके चलना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की बहुत आवश्यकता है, जो जुड़ा हुआ है परचेजिंग पावर से, और परचेजिंग पावर जुड़ा हुआ है आर्थिक प्रगति से। तो ये सब चीजें गुथी हुई हैं। आप कहीं भी भौतिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास को अलग करके नहीं देख सकते हैं कि ये चीजें तीन अलग अलग हैं, एक आम है, एक संतरा है और एक नाशपाती है। नहीं, आम की ही तीन वैरायटीज हैं और सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। मुझे यही कहना है। बाकी अब मैं विद्वान लोगों से सुनना भी चाहूंगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू दादा। आपने बहुत सही कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की को सुधारना होगा, और उसके लिए इकोनॉमी जो है बड़ी बेसिक लाइन है, बॉटम लाइन है। और भारत को यदि हम लेते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और unless there is a political will to push the agriculture, whether it's a technological area, whether it's a research area, so that we grow much more, because we have agricultural lands। और पूरा इतिहास रहा है कि हम कृषि प्रधान देश रहे हैं। If we go by the Prout partition, it says that 30% people will be, at least 30-40 will be depending on the agriculture, 20% on agrico-industry. Agrico-industry means तो those industry like research development, जैसे cold storage है, बीज का रख रखाव है, there are many things, tractors हैं, I mean any technology which is helping the agriculture, that is comes in agrico, and agrico is going to consume 20% of the population, and 20% is agro industries, that is agriculture based industries. So what we are confining here is 70% of the population. If it is well planned, typically on agriculture, can be a very healthy and wealthy nation. Because what is nation? Unless individual is strengthened, unless individual is healthy, then only nation will be healthy. A nation certainly not only the boundary lines, it is its citizen. So सबको, इसलिए ज्यादा जो प्राइमरी, हम आपकी बात से लेते हैं कि जो प्राइमरी चीज है कि कृषि पर इसको कितना उन्नत कर सकें। और उदाहरण के लिए यदि इजराइल यदि कर सकता है खेती, इन स्पाइट ऑफ जिसको हम खंड प्रस्थ की जैसा जगह था, और आज वो इंद्रप्रस्थ बना लिया है, तो भारत तो बहुत सुखी है इन दैट सेंस। तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा आपने पॉइंट बोला था टेक्नोलॉजी का यूज, और ये भी सच है दादा, यू राइटली सेड दैट वी आर इंटरडिपेंडेंट। बाबा भी कहते हैं द वर्ल्ड हैज बिकम अ विलेज टुडे। So unless we have that kind of interdependency, but what is missing there is the people have self-centered mansikta, that is typically missing. I mean, unless there is a coordinated cooperation, unless जैसे एक परिवार में रहता है, जैसे कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात तो करते हैं, but are we ready to help others and willingly we want others also to grow? No.
because that very point is missing, and that is why there is a lot of difference. So at least agriculture part, India should focus predominantly, because देखिए 10% white collar job तो है ही, हर जगह है. यहाँ भी इंडस्ट्री जो है नॉन एग्रीकल्चरल है वो भी 7% है, maximum you can go up to 10%. But what is missing is the push in agriculture and agriculture based industry like agrico and agro industries. So एक और बात दादा मैं कहना चाहता हूँ, kindly if anybody want to talk in this subject, please raise your hands. You will be asked to talk here, please. तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ दादा कि जैसे 75 साल क्या 76 साल होने को आ गए हैं, वी वर द इंडिपेंडेंट, वी बिकेम इंडिपेंडेंट. पर यदि हम, जैसा आपने भी बताया, हम दूसरे पर ही आश्रित हैं शुरू से ही. रसिया ने लगाया हमारे पास स्टील प्लांट्स, एंड इवन फॉर मेनी थिंग्स वी आर डिपेंडिंग ऑन सम अदर डेवलप्ड कंट्रीज. बट वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड दैट we should take in a very easy step. And the first step is the boosting agriculture, where at least we can make the all basic survival requirements of the life guaranteed, and that is possible provided there is a will to do that. Otherwise ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यदि हम वही करते रहेंगे जैसा करते रहे हैं तो रिजल्ट भी वही होगा जो होता रहा है. जैसा 75 साल में होगा वैसे ही 1.25 साल भी हम सेलिब्रेट करेंगे, एंड वी विल से दैट in coming 25 years we are going to do that. और बाबा एक बात बहुत क्लियर करते हैं, his last प्रवचन in mind grows in magnitude में श्री प्रभात रंजन सरकार अपने रिनासेंस यूनिवर्सल के अभिभाषण में, प्रवचन में कहते हैं if there is a proper planning and work with that, one can be 100% successful. The probability is 100% unless the cosmic power interferes. So that should be visible, because in the first year we want to grow in that direction. So at least that planning should be visible, and that should be so glaringly acceptable to all. So these kind of plannings are also missing, because we are following a system so-called democratic political. So everybody is busy in that, and this part is missing. And Prabhu has also the solution for that. So anybody else, please, may I ask Acharya Dilip Dada to speak on the subject? Acharya Dilip ji? Yes, Dada, please. Thank you. Namaskar. Namaskar, Dada ji. Today you have a topic that how India can become a developed country within 20 years' time. And then you have given also in this synopsis that in respect of culture, economy, and politics, there are 3 things which you have mentioned in your. We are talking of how we can become. And in the today's environment, is it possible? The first thing that comes in mind, even suppose if we become a country like America, suppose it's a country of $35 trillion economy, we are reaching around $4 trillion economy as of now. There is a huge gap. Even if you become like America, I'm just giving an example. Right. So what? In America also people are, beggars are there. They are not able to meet their day-to-day requirements. There are many people. Whereas there are people, they have a lot of wealth. So the same kind of developments will also happen in India. So we have to, first of all, we have to understand from the development, what we mean by development. Is it the development of the economy, or it's for the people? So we are not, when we are talking of development here, probably we are talking of the development of the person, of the people living here, not of the economy. Even today, with a lesser money, we can be much more prosperous individually. That possibility exists. We were talking about agriculture and other things and technology. Since we have now developed our own technology, and we always try to find some kind of help from other nations, developed nations, to import their technology. And nowadays we are also getting also. The problem is the requirement of each and every nation is different. So we have to make our own technology which suits to us. We are the people of so many billions of people we have.
140 crores people we have. So the technology, suppose someone develops a technology where no human intervention is required, how that will be helpful for the country? So we have to see that how we develop in our economy, wherein there is a inclusive, unlike all the people, they have their participation, but there is no kind of efforts on this account. The easy thing is to borrow and borrow. This is happening from last many like 60, 70 years. We know this is the thing which was happening. Earlier, the reason was when you borrow money from outside or technology from outside, the political parties were getting kicked, and this is how they were running the political system. So that the kickback which used to come, because, and that was the reason that everyone wanted, okay, let us buy something from outside, technology or equipment or anything. That used to be the sole purpose. And these all politicians, they had through their ministerial things, control that if you have to hire something from outside, so if the order is say of volume is 1,000 crores or something like that, then that needs approval of the minister. Why it needs the approval of the minister? Because he wanted a cut from that. There was a first, there has to be understanding between the minister and the person or the country which is giving some kind of thing. That this is how the Bofors and other things were happening. And secondly, initially we started our system, which was a PSUs, public sector undertaking. If you develop the public sector undertaking, you don't get money, because this PSUs can't give you political chanda. So now they started a system. No, we don't want any political PSUs. Let all the development be in the private sector. So the private sector, what will happen? Now they will, when your industry is growing, then the political system gets money from those private sectors. So this all now their emphasis is that even the PSUs, you privatize them so that they get the it becomes a private owned company, and then from private owned company they will get the money, political chanda they can get. So this is the system they have adopted. They are least concerned as how all the people of the country will be part of the economy. So when we are talking of development of economy, we have to think afresh. We have to think. That's why Baba has given a system Baba has divided economy into 4 parts: people's economy, psycho-economy, general economy, commercial economy. Baba has given 4 different things, and 4 different things are to take care of different environment. So from among all the 4, people's economy, Baba has given a first priority. It will be on the top of it. So any development whichever is taking place, or any system or any other kind of thing, people's care has to be a prime concern for the government, which is not today. We suppose in the last 10 years, we have from economically we have developed, and almost from $3 trillion economy, or 2.5 it was around. Now we are reaching $4 trillion economy. So almost $1 trillion we have added in this very 9 years time. Whereas if we see the corresponding 60 years, we could hardly add our $2 trillion. But despite this economic development, what is the ground level? In the ground, still people, they need to have a subsidized food. ₹2 में चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, and whatnot. Why when the economy is developing so much, why there is a competition between the political parties to give free freebies? So this is the thing which we have to see. My point is that for the development of the nation,
let us not look from the prism of the Western countries that the development is what America is. Then we are going to mistake ourselves. We have to see from our own angle, and that is why the Proud Baba has given clearly many indications what development is. So that development, like where inclusive, and this is for the whole of the population which is covered, and almost everyone gets it's a share in the economy. This is how the economy will grow. We have to see, and how this will be done. It's not a small job, and it's not a small thing. We have to segment ourselves in maybe into a 20-30 parts, and each segment has to be discussed. Then only we will come to some conclusion. Then how we can do. In fact, as a Proutist, it's our duty. Let us make segmentation in the economy, and each segment let us discuss ourselves. Then how, in a given situation, and with the margin of transition, because all of a sudden you can't do this. So this is possible. This is very much possible as per the Proutistic system. But first requirement is planning. That is what Acharya said, that we have to split, of course, and we have to prioritize what is our priority, what we should go in first go, second go, third go, and year by year, unless you have a plan better, we will be going nowhere, और यही पार्टी के दलदल में फंस के हम भी रह जाएंगे. So Prout recommends that partyless system, and that we have to penetrate in masses and advocate that so strongly that India should be ready to accept our indigenous system, and there it is possibility. Otherwise it looks very difficult. They will be giving high sounding lectures from different platforms and just fooling the people and getting them captured for the vote and nothing else. So unless we do something different, we are going to be there where we are. So just making good statements is not going to work. So that planning we want to see, and for that we wanted to organize this. So thank you very much. Anybody else? Can I request my Mitu Singh Didi, are you able to unmute? Thank you, Didi. Namaskar, Dada. Namaskar. Actually, that time, by mistake, I raised my hand, but since you have called me, so I want to share my personal understanding about the subject. Yeah. When today I was just heard about the this meeting topic and was going through the internet, so I found an orthodox definition of developing country and developed country, where I was not satisfied and I was stuck there only. Like in developed countries are those whose economy is industrial based, and developing countries, they are saying, whose economy is agro based. I think this should be flipped. Actually, the thought of development can be fulfilled only when any country, not in India, any country would be agro based economy, because we have seen the country like America and all, they had been said as a developed country, but under any emergency they are in a bad situation than the India. We have seen it in Corona, and when there was a depreciation, economic depreciation was there. So unless our economists will change the definition, their outlook about it, it cannot be achieved. Thank you very much, Dada. Thank you, Didi. I appreciate very key point that we are measuring every development, as Dada told, we have 1 trillion we have added, where it is going. So the fact is, major chunk is going to the lion's share goes to the capitalists, and armed people are I should not name, but you know very well, the people from the Red Fort, they declare that you don't have to understood wrong these capitalists, because if they will become rich, the money will trickle down and go to the lowest level. This is just a hypothesis. This is not working today, and this is very much visible. That is why we are feeding 80 crore people. So may I request, and that Didi, again, I would like to highlight that GDP is not the parameter you rightly said, and so this kind of this blind definition it is.
It has to be attached with purchasing capacity. It has to be attached with the quality of life and happiness index. So we should not be just blindly following this GDP for the growth. May I ask Acharya Krishna Sundaranand ji to speak on the subject? Thank you, Dada. You can unmute and speak. नमस्कार दादाजी, नमस्कार एवरीवन। भारत डेवलप्ड कंट्री ही था। आज जिस भारत की बात करते हैं, हम लोगों ने जब प्राउड का क्लास लॉकडाउन के पीरियड में कर रहे थे तो हम लोग सोचे कि डिसमेंटल भारत दिखाया जाता है, और जो हम लोग को दिख रहा है डिसमेंटल करके दिखाया गया। बाबा का एक आर्टिकल है एग्रेरियन रेवोल्यूशन। तो जब हम लोग उसका सेमिनार कर रहे थे तो सेमिनार क्लास को समझाने के क्रम में हम लोग को बताया गया, और मैं अपने जीवन काल में बचपन में देखा हूँ, भारत की जो ग्राम्य व्यवस्था थी प्योरली कृषि के ऊपर आधारित थी। जब किसानों के घर में जब इस खेत से जब फसल आते थे तो जो सोशल फ्रेंड्स हैं, जैसे जो ब्लैक स्मिथ हैं, कारपेंटर हैं, जो नाई हैं, जो कुम्हार हैं, इनके परिवार भी उसी से चलता था, क्योंकि किसान के फसल जब आता है उसे सबको दिया जाता था। साल भर उन लोग या 6 महीना किसान को मदद करते, और जब किसान का फसल आता है तो किसान के पास से उनके यहाँ आना जाता था उनके परिवार को चलाने के लिए। तो कृषि पर ही आधारित होकर के ये समाज व्यवस्था, ग्राम्य व्यवस्था भारत की थी, और जिस व्यवस्था के कारण ही भारत संपन्न था, और संपन्नता के कारण ही अट्रैक्ट होकर के लोग भारत में आए थे आक्रमण करने के लिए, जो करने के लिए। तो अभी जैसा कि राजेंद्र दादा अभी बोल रहे थे कि हम देखते हैं कि बैलेंस इकोनॉमी में 70% लोग कृषि पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो जब तक आज इंडस्ट्री के क्षेत्र में ही कृषि सहायक जो उद्योग हैं, जैसे ट्रेडिशनल खेती हो रही है, उसमें नुकसान हो रहा है। कोई भी किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाह रहे हैं। तो यदि किसानों के उन्नति के लिए, किसानों को सहायता करने के लिए यदि इंडस्ट्री वैसे डेवलप किया जाए ना, तो कृषि यदि उन्नत होगी तो कृषि आधारित जितने भी सामान है, चीजें हैं, सभी डेवलप होंगे। बाकी जो एक पार्ट जो कमर्शियल इकोनॉमी है वो तो ऑटोमेशन से डेवलप हो ही जाएगी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज रोजगार खोजने की बात है जहां तक, तो कृषि आधारित उद्योग और कृषि सहायक उद्योग में बहुत सारे रोजगार हैं। तो उसको यदि सरकार प्लान करके सिस्टमेटिक वैसा कोई व्यवस्था डेवलप करे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। Thank you, Dada. Thank you very much. May I request Satya Srayanand Dadaji, if you are available and if you are in position to speak, can you unmute yourself? SC दादा बहुत दिन बाद हम लोग को ज्वाइन किए हुए दिख रहे हैं। So yes दादाजी, नमस्कार। Thank you. नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार दादा। अभी मैं हारानंद दादाजी को सुन रहा था, आपको सुना, सागर दादा को सुना, बीच में नीतू दीदी भी कुछ बोली, और अभी हमारे कृष्ण सुंदरानंद जी ने कहा। तो ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिन जिन पहलुओं पे चर्चा की गई, सब लोगों ने अपने जगह पे जो बातें कही हैं, क्योंकि आज जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, आज खड़े नहीं हैं। बाबा भी कहते हैं कि इस दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज बिना सहयोग और सहभागिता के नहीं होगी। तो अगर हम अपने राष्ट्र को विकसित करना चाहते हैं, इस भारत राष्ट्र को विकसित करना चाहते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र की क्या स्थिति है, और इसको लेकर
कई चीजों की बात, ट्रेड की बात हो रही थी, टेक्नोलॉजी आदान प्रदान की बात कही गई। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इसकी जरूरत है। मैं जब आप लोगों को सुन रहा था तो बार बार मेरे मन में एक बात आ रही है कि मैं पिछले 9 महीने से एसजी का पदभार संभाला हूं और रेगुलर ये जो हमारा आईएफ का मीटिंग है ये चल रहा है। आप लोग इसमें दिन रात लगे हैं। मेरी एक पीड़ा है कि मैं या हम लोग इस बात को अन्य लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये जो बौद्धिक बल हमारे आचार्य लोगों के पास, हमारे प्रबुद्ध हरानंद दादा हो गए, आप हो गए, नीतू जी हो गए, और जो इसमें जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, मैं देख रहा हूं कि हर कोई का जो बुद्धि बल है, इंटेलेक्चुअली वो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि हम कैसे बाहर जाएं, कैसे यूनिवर्सिटी पहुंचे, कैसे कॉलेज तक जाएं, वहाँ के लेक्चरर्स के पास, प्रोफेसर के साथ, वाइस चांसलर के पास पहुंचकर हम अपनी बात को रख सकें। इस बात पे फोकस करने की जरूरत है। और मेरा ये निवेदन होगा कि अगर हो सके तो अगला सब्जेक्ट यही डिसाइड करें आप कि ये जो प्रौढ़ का प्रचार है, जो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि प्रचार थम गया है, स्टडी सर्कल चल रहा है, ऑनलाइन डिस्कशन चल रहा है आपस में, लेकिन जो नए लोग जिस गति से हम अपेक्षा कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी ही नहीं, पूरे आनंद मार्ग सोसाइटी के अधिकांश लोग कहेंगे दादा प्रौढ़ कब आए। अरे भाई, जब तक प्रौढ़ को हम जन जन तक पहुंचा न दें, हमारी बात को लोग जाने नहीं, तो कैसे क्या होगा। तो आपस का जो यह डिस्कशन है, ये अच्छी बात है कि हम सबों का भी अपना एक नॉलेज अपग्रेड कर रहा है। एक दूसरे को सुनकर बहुत सारे चीजों को हम लोग और बढ़िया तरीके से समझ ले रहे हैं। लेकिन ये बात जनमानस तक कैसे पहुंचे, इस बात के लिए मैं यहाँ जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया इस पर विचार किया जाए। हमारी गति, प्रचार की गति द्रुत हो। आज भी यहाँ जब मैं आरडीएस में हूँ रांची में, और आपका मीटिंग जब शुरू हुआ उसके थोड़ा देर पहले ही मैं वहाँ मीटिंग से ही निकल के आया, तो यहाँ भी यही डिस्कशन हो रहा था और हमको ये कहा गया कि बहुत ही आशा के साथ, विश्वास के साथ कि एक इनर्जेटिक एसटी दादा को भेज रहे हैं। तो ठीक है, लोग कहते हैं और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दी गई है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ जाने की बात है, जहाँ तक अपने आदर्श को पहुँचाने की बात है, तो आप लोग उसके बहुत लायक हैं। लेकिन हम जा नहीं रहे हैं, या हम ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कहीं जा रहे हैं तो हमें सूचना नहीं है। अगर सूचना नहीं है तो हमें सूचित करेंगे, तो मैं आगे संस्था के प्रधान को, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आचार्य विष्णुदेवानंद दादा जी, उन तक हम ये बात पहुंचाएं, क्योंकि हमें भी पता नहीं है और कहीं ऐसा नहीं लगता, दिखता नहीं है कहीं व्हाट्सएप वगैरह में भी कि कहीं कोई ऐसे हम लोग बाहर के लोगों के बीच जा रहे हैं। तो कृपया इस पे ध्यान दिया जाए। और आज आप लोग का डिस्कशन सुन के, आज ही नहीं, मैं जब भी आप लोग का डिस्कशन सुनता हूँ तो मैं तो आप लोगों को सुन के हमारा हर चीज अपग्रेड होता है।
यही मुझे कहना है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन मेरी जो पीड़ा है, मैं समझता हूँ वो आपकी भी पीड़ा है Yeah. कि हम नए लोगों तक कैसे पहुंचे, ये फ्रॉड अन्य लोगों तक कैसे पहुंचे। इतनी सारी शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ जाना है। उसको बाबा ने 5 भागों में बांट दिया। अब मान लीजिए इंटेलेक्चुअल्स है, तो इंटेलेक्चुअल्स सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ही नहीं बैठे। आज जो इंटेलेक्चुअल्स है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को लोग ज्वाइन किए हुए हैं। जितना भी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका जो पूरा घराना है, अब देखिए वहां पे सारे लोग बैठे हुए हैं। तो उन तक हमारी बात कैसे पहुंचे, ये चिंतन का विषय है। इसके लिए आप लोग सोचें, और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ आप बताएं, तो मैं 100% अपना इस कार्य के लिए देने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ बाबा ने दिया है। Thank you, Dada. यही मुझे कहना है, और मैं हृदय की गहराई से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। Thank you, Dada. Very much required. आपकी जो पीड़ा है, being the head of the department, ये बड़ी natural है और होना भी चाहिए। तो let us take the action plan. The first Sunday, like every month, we is missing the. We cannot discuss in open forum. Let us have an organization forum on first Sunday evening at around 8 p.m. Sorry, 8 p.m. Sunday it becomes very difficult. So whenever some senior people can suggest, Acharya, we will have it. But we can discuss this, how to move ahead in organizational meeting in the next forum. Thank you very much. So दादा, आपकी बातों से हम लोग सहमत हैं कि प्रचार प्रसार जिस रफ्तार से होना चाहिए, हमारे पास इतनी ऑथेंटिक बातें हैं पर समाज में जा नहीं पा रहे हैं। एक और जो पहलू है, हम लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारे पास जितने आइडियाज हैं उतना समाज में लोगों के पास नहीं है, लीडर्स के पास नहीं है। द वेरी बेसिक थिंग्स मिसिंग इज कि हम जैसे बोलते हैं ना, डेवलप्ड नेशन की बात करें तो नेशन जो है वो लोगों का समुच्चय है। तो जब तक हर व्यक्ति जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा, मॉरल नहीं होगा, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। So we should first, I mean, this is a recommendation for the government and for everyone as a citizen, that unless everyone becomes a good citizen, a nation cannot be good. That is why Proud says that you must have a flaming moral purpose so that greed, oppression, exploitation shrivel before the fire in you. So this is totally missing today from our culture, our society, our politics, and at every field. रिसर्च का इतना प्राइवेटाइजेशन हो गया है, नॉन शेयरिंग इश्यू हो गए हैं, इसी तरह से जो सोशल एस्पेक्ट्स भी ऐसे बिखरते जा रहे हैं, है ना। तो और इतनी डिस्पैरिटी है समाज में, वेदर इट्स अ जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी और इट इज पॉलिटिकल डिस्पैरिटी. So in all respect, we have our economic differences, inequality. So first, our purpose is to make economically people at least sustainable enough so that they can think of giving their share, as Dilip Dada told, कि यदि सब लोग मिल करके समृद्धि में अपना हाथ बटाएं, तो India can certainly be a developed country in a very short, but we have to define our priorities. We cannot go by the priorities of so-called developed countries where still there are homeless people, there are jobless people, even still there they are. So, Acharya ji, आपने hand raise किया था. Would you like to say something, Dilip Dada? Yeah, yes. In fact, it has given a support to me that at least S.G. Dada has a pen for Proud. And when we go to the to university or any place where intellectuals are sitting, what we are going to discuss, the principles or the applied side? It has to be both, because only principles that I will give employment to 100% people, how you will give? We should think on this. These are the points, and Baba has given these things, and let us discuss those things. Let there be meeting
on every say alternate day or every day or on a given time, and we have to have a very pointed thing. And as Baba has given the system, then if there is a subject, somebody should speak pro and somebody should in against. Thank you so much, and we can understand the concern of everyone is having the pain inside. That's why such things are coming out. Yes, Pankaj ji, we would like to hear a young voice from you. Thank you so much. Okay. यस सर। सर मैंने डिस्कशन मतलब जैसे सुनी, मेरे दिमाग में मतलब जैसे कुछ जो सवाल आ रहे थे वो मैं मतलब जैसे डिस्कस करना चाह रहा था। मतलब हम डेवलपमेंट के रिलेटेड मतलब जैसे कि क्या सोच रहे हैं कि जैसे 25 साल बाद कैसा हो हमारा भारत, मतलब Absolutely. जो हम मतलब हमने एक्चुअली में डेवलपमेंट का ट्रू मीनिंग हम जो सोच रहे हैं मतलब किसकी दूसरी कंट्री को देख के मेजर कर रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक मेजरमेंट्स बना दिए, जैसे जीडीपी हो गया और हो गया कि भी हाँ कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितने क्या इंडेक्स चल रहे हैं। सर ये सारी मार्केटेड चीजें आई है, मुझे लगता है कई बारी कि भी हाँ ठीक है, एक मतलब प्रोग्रेस को नापने का भी Absolutely. Yes, you're right. और मतलब हमें ये देखना है कि डेवलपमेंट के नाम पे जैसे अमेरिका को हम मान रहे हैं डेवलपमेंट है, पर मुझे लगता है कि वो डेवलपमेंट शायद नहीं है, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है और अपना सारा जो भी उनका गार्बेज होगा दूसरी कंट्रीज में जाके उसको डिकम्पोज कर रहा है। तो मे बी वो डेवलपमेंट मतलब ठीक है, एक साइंस वाली डेवलपमेंट हो रही है, बट ट्रू सेंस में डेवलपमेंट दिमाग में सवाल आते रहते हैं कि क्या वो डेवलपमेंट है, हम किसे डेवलपमेंट माने। जैसे अभी जिस सेंस में डेवलपमेंट चल रही है, नेचुरल रिसोर्सेज काफी जगह पे, तो हमको ये सोचना चाहिए कि भी आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी है, और डेवलपमेंट मतलब खुश रहना। उस टाइम पे लोग दुखी होंगे, खुश होंगे उस डेवलपमेंट के नाम पे। कल को पानी नहीं बचा तो मतलब जैसे हवा और पानी इस टाइम पे वो बहुत जरूरी है, जो प्रिजर्व रहने चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह। तो ये सारी चीजें सिटीज में पोल्यूटेड हो चुकी हैं, सोइल भी हमारी खराब हो रही है। हमारे भारत में जैसे आजादी के बाद हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। उस टाइम पे जो फर्टिलाइजर्स वगैरह थे उनकी मतलब उनका यूसेज बढ़ा और मतलब लोग खुश हो गए कि जो प्रोडक्शन है वो कल्चर की, क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत कुछ निकलता है। एग्रीकल्चर से मेरे कपड़े निकल रहे हैं, कागज निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है, काफी कुछ एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। तो हमने सर पर उससे ना सॉइल का जो मेन कंटेंट था, अपर लेयर, वो खत्म हो गई, क्योंकि सॉइल में जो बेसिकली जीवाश्म होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो खत्म हो गए। हमने उसको एक जैसे होता है सप्लीमेंट्स दे दे के सॉइल में से प्रोडक्शन लेनी स्टार्ट कर दी। बट मे बी वही रीजन था कि भी आज फार्मर्स उसके बाद दुखी हैं, क्योंकि वो उसी फॉर्मूले को कर रहे थे। शायद जितना मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस करी हैं, खुद फार्मर से बात भी करी कईयों से, कि जितना वो जैसे मतलब बीज खरीदते हैं पहले, फिर वो मतलब स्प्रे करने के लिए खरीदते हैं, फिर वो यूरिया खरीदते हैं, तो जितना वो लगाते हैं सर, और उसके बाद वो ट्रैक्टर भी चलवा रहे हैं, फिर लास्ट में उसकी कटिंग होगी तो भी मशीनों से चल रहा है। तो जितना वो लगाते हैं सर, उतना ही उनको रिटर्न आता है। वो अपनी एफर्ट जो टाइम लगाते हैं, इतने महीने काम कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उसको वो कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट एक्चुअली। Yes. और अगर किसी और से बात भी करी कि मतलब जैसे हमको कोई स्टीविया है या कोई अश्वगंधा है या डिफरेंट टाइप ऑफ, तो लोग ना मतलब लोगों को चेंज करना इतना आसान भी नहीं है। मतलब वो नहीं मतलब करना चाहते हैं। मतलब ये बातें मैंने मतलब एक CSIR में जाके अटेंड करी थी, मीटिंग्स वगैरह, वहां पे देखा था कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो इतना आसान भी नहीं है लोगों को चेंज करना। लोग ट्रेडिशनल से, बट कहीं ना कहीं दिखता है कि चलो हम यूरिया वाली प्रोडक्शन खा रहे हैं, बट उससे बीमारियां भी आ रही हैं हमें। मे बी वी आर लॉस्ट की डेवलपमेंट क्या है। ज्यादा प्रोडक्शन तो ले ली, बट बीमारियां भी साथ में ले ली हैं बॉडी में। तो काफी कुछ लॉस्ट हो चुका है, जिसका हमें मे बी पता नहीं है कि कहाँ पे हम लॉस्ट हो चुके हैं। तो और हमको खुद ही देखना पड़ेगा, मे बी डेवलपमेंट, क्या पता हमको भारत को ही मिसाल खड़ी करनी हो कि दिस इज डेवलपमेंट, जो बाकी चीजें हो रखी हैं वो डेवलपमेंट ना हो। क्या पता हमें ही कोई नए मतलब मेजर्स लाने हो डेवलपमेंट के नाम पे। हाँ, बाकी एक चीज दिखती है कि जैसे डिस्पैरिटी मतलब जो इनकम में है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ कैप मतलब जैसे 10% लोगों के पास ही पैसा है, बाकी 90% के पास होगा उतना। तो वो हमको देखना पड़ेगा। जैसे एग्री यहाँ पे फार्मर्स हैं, वो गरीब ही रह जा रहे हैं, तो हमको उसके ऊपर सोल्यूशंस बनाने चाहिए बेसिकली। जैसे आपका मैंने सुना था एक कोऑपरेटिव वाला, वो बहुत अच्छा था कि मतलब हम यहाँ पे कोऑपरेटिव्स बनाएं जिसके थ्रू हम उनको गाइड कर सकते हैं। अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है,
हम उनके जो गैप्स हैं उनको ब्रिज करें कि चलो वो घर से लगा रहे हैं, उन्हीं को एम्पावर करा और उनकी ही ब्रांडिंग करने में हेल्प करी। सो मतलब जैसे हर एक गांव का अपना ब्रांड मतलब ब्रांड बन रहा है, मतलब लोकल लेवल पे मार्केट प्लेसेस सेटअप हो जाएं जो लोकल टू लोकल भी फीड कर रहे हैं, या जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे और कोई बाय करना चाह रहा है, तो उससे जो मिडिल मैन है, मतलब जो फालतू में बैठ के ही कमा रहा है, वो भी मतलब खत्म होता है वैसे मेरे समझने से। मतलब मैं मतलब ये सारी चीजों की ना काफी टाइम से देखता रहता था, रिसर्च करता रहता था, तो ये सारे मेरे दिमाग में थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, जिनको कैसे खत्म किया जाए। ग्राउंड लेवल पे यही है कि हमको लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनके आगे एग्जाम्पल खड़ी करनी पड़ेगी कि हाँ ये इस तरीके से फार्मिंग करो, क्योंकि दे पीपल, हम उनको बोलेंगे तो नहीं चलेंगे सर। वो अगर हम उनके सामने काम वो खड़ा करके रख देंगे, एग्जाम्पल खड़ी करके रख देंगे, तब वो फिर भी फॉलो करेंगे। बोलने से काफी लोग सर फॉलो नहीं करते हैं। हाँ दे मतलब जैसे किसी को देखेंगे रियल लाइफ में, हाँ इसने कर दिया, फिर लोग चलते हैं। तो अगर हम वैसा नहीं कर सकते हैं तो मे बी हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ जैसे कोऑपरेटिव बनाए, हम उनको स्टेप बाय स्टेप, जैसे होता है लोगों को उंगली पकड़ के भी आगे लेके जाना पड़ता है कई बार कि हाँ ये करो, कोई बात नहीं। मोरल सपोर्ट भी सर कई बार काफी होता है। कुछ लोग ट्राई करना चाहते हैं नई नई चीजें, तो सर शायद मे बी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमको ट्राई करनी चाहिए अलग अलग। बाकी हाँ वही है कि ग्राउंड वर्क जैसे हम ट्राई करेंगे तो उसको ऑप्टिमाइज करेंगे बाद में। ये सब थॉट्स हैं, बाकी मतलब ठीक है सर काफी। Pankaj ji, thank you very much. You have rightly Thank hit at the 3 points, very specific point. that कृषि को जब तक उद्योग का दर्जा नहीं देंगे, that is what proud takeaway is. Till that time, किसान की स्थिति यही रहेगी, and this all needs, then only they will get the justifiable cost of their production to their production. और जैसा आपने भारत को अपनी मिसाल, this is a very wonderful point. This Praut is, if you talk in a limited terms, is an indigenous philosophy. This has been created understanding the psychology of India, at least. So this is very much adoptable here first. And then why we are copying others, you rightly said, why we cannot establish something new and let world copy that. We are in that situation. And you rightly said that through coordinated cooperation, I mean cooperative, we can empower others. And by giving some examples, getting associated with them, hand holding. So these kind of things are required, and that is what our Acharya was saying. These things are, yeah. Pankaj, you want to say something? No sir, that's all. Thank Thank you. you. Thank you very much. So this is very important. Anyway, Siva, Bangalore, would you like to talk something? Something is there in your mind, if at all? Yes, Dada, namaskar. Namaskar. Sorry that I joined late. That's I joined late. fine. Actually, I was planning to reach 8 o'clock, but somehow got late. Okay. Well, actually, the topic is very interesting. 20 years away from now, how we would like to see the world. Well, actually, I have my own thoughts. I would like to put in a very precisely. The responsibility to see 20 years later from now is very big, and that responsibility mostly lies on the shoulders of the children of Baba. Those who feel that they are the children, so the responsibility lies on their shoulders, as much as I am also one of them. But there need to be a lot of movement is required. A lot of progress is required to start. If I put it in this way, that if we say that many of the whole timers or grihis, we feel that somebody is initiated or somebody is doing sadhana, so that is enough, or that is I have done my duty. Actually, we have just started doing our duty. It is just the beginning of our responsibility, and every margi should feel, at least senior margi, at least 5 years, 10 years sadhakas, all of us, including acharyas, all of us should feel that Baba has physically struggled so much just for establishing Prabhupada. Baba did not physically suffer to establish other spiritual philosophy, tantric philosophy, or all other neo-humanism, or all other social dynamics. I mean, all other spiritual content or yoga. But Ananda Marga is not just yoga. We need to understand that
Ananda Marga is beyond yoga. Yoga is in terms of, I am talking in terms of what the other people in the society think that yoga means to do some asanas, to do some sadhana, meditation. So that is yoga. But it is not just that. And therefore, the responsibility lies on all of us, all the Margis, all over the world, that we have to propagate Prautistic philosophy, neo-humanism, to every possible person, to every possible institution that we have to. So that we should start doing. I am talking in terms of our roles and responsibilities, being Margis to give to society. I am talking in that way. And as our Dilip Dada was saying, I joined later, late, but I could get some points from him that many of the people either shy away or feel not good enough or not to present themselves that they are proudest. So we will have to present ourselves as proudest. We will have to be proud to say that we are proudest. But people or Margis seems to be afraid to say that they are Proudist, but they are Margis or they do sadhana. So awareness has to be created amongst the Margi brothers, sisters, that Proud is very, very essential. Unless the message, we all know that when somebody asked Baba that when Proud will be established, and Baba brought the points from one level to the lower level to the lower level, and finally said, let the people, ultimately Baba said that let the people know at least that Proud is there. So at least let them know about Proud. So our effort has to be that Proud is there and what Proud speaks for, and Proud the alternative. People should know that Proud is the alternative. Rather, it is for all the socio-economic problems or cultural problems or various problems in the society all over the world. Proud is the solution. Proud is the panacea. But we are somewhere lagging behind, and that has to happen. So on these lines, how we can take Proud forward through neo-humanistic approach, that is one thing very, very essential. Otherwise, 20 years later from now would be 20 years back from now. I don't know. I just feel like that because I'm only a 30 years Margi. Since 30 years I have been doing sadhana. I'm very regular to sadhana by Baba's grace. But I have been seeing Marga all over. The spirit about talking about Proud and neo-humanism is a second position, third position, or fourth position. People like to just say do some yoga asanas, meditation, or speak something and just initiate somebody, or my job is over. So my job is only started, not over. Otherwise, there is pseudo culture. There is exploitation every walk of life. You talk about economy, you talk about education, you talk about culture, you talk about any other aspect of social dynamics. There is always we see that what is supposed to be there and what is there is a lot of gap. There is a lot of gap. So how we can make a strong foundation on Protestant principles, and how we make Margis feel proud to say that I am an Anand Margi, I am a Protest. So those things have to be inculcated, those things have to be brought on the forum. That is what very, very important, I think. Your concern is very sure, Dada, but today the word is there is very पहले से काफी improve हो गया है कि लोग अपने आप को प्रोटेस्ट नहीं कहना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. And people are coming up like you, me. So it is that. So, but one thing is very clear. Okay, today the vacuum is very strong. Now this is a time. If we miss, as you rightly said, we will be far behind, and it will be looking beyond reach. So let me request Deepeshwar again, another young person, to speak on the subject. Can you unmute Deepeshwar ji? Namaskar everyone. Namaskar. Namaskar. Basically, I'm also I'm not having much idea like how will be the world from 25 years from now. So, but it's still like as just to add our what is Sridhara concerned and other like what is our responsibility ahead. So we should definitely put our thoughts like our
proud Praneta Sri Priya Sarkar thoughts in the in a newer generation, or at least we can give a point of thinking. Like people are very much fed up with today's trending news or whatever coming on news channels, or like lot of things mishaps happen in between, right? And they they are trying to raise their voice through independent channels like social media. Everyone is giving their point of view, and they are trying to definitely they are also getting success in the right concern. Like they're somewhere if they are raising voice for any animals or any concern like men's issues or anything. So people are right people are trying to gather together, and they are solving also. It is not like there is very much dark in the overall world. So we also have to be little bit come in picture in that concern, either through like visiting. That's definitely we have to come in market, and like market means I'm telling like it's come in practical world. We should go and meet people, either through like I used to like, just I'm giving some example, like I used to go to libraries, public libraries, keeping some books, or either donating or asking them to buy also sometime. So I used to, Marga and Proud, yes. yeah, right. At least they can go through our magazines, or so electronics way or whatever way. So also, if we do not keep proud in words, but yes, at least we can keep our proud in nutshell has lot of chapters which is part of RU only, like Yeah, yeah. Renaissance Most in of the chapters, Proud. yeah. Most of the Yeah, RV all are are- very much there in Proud Nutshell, yes. proud in nutshell. So I used to try I organize seminars on those topics in college. So people are very much interestingly listening to orator, or so that way is the very good prachar, and that we should do try, and like at least whatever we are discussing here, we should go there and discuss at least. Right. And like if we are in any like city, we should at least try once in a month, or we will get the chance. They will also. It's not easy to get chance, but if we try, we will get at least like uh, some people will give a month, Yes. because nowadays they are also very concerned, like we will start propagating Anand Marga and here and there, but if we approach very scientifically, and so they will definitely listen to us, and they will keep. So but it's still this all Baba's grace, but as it's our responsibility, we can keep going ahead. Okay, thank you, Dada. Namaskar. Thank you, Deepeshwar ji, you rightly said. And we also feel, I think UPIF team is the only team who can take up Renaissance Universal part also, which is the Baba presidential speeches. Of course, because this is the intellectual. So I think this is all together can go. That is one part. और आज आप सही बोले कि लोग जो हैं तीन कर्तव्य विमूढ़ हैं, क्या करें क्या नहीं करें. People are at crossroad. That is why today the vacuum is very strong, and unless we feel that vacuum, some Kachara philosophy will feel, and then will be maybe 100 years behind. So Satya Narayan ji, can you unmute yourself and speak on the subject? Satya Narayan Dadaji, please. Thank you. नमस्कार सभी को। जी दादा, ये यूपीआईएफ का जो रोल है दादा, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं दादा अच्छी तरह से। प्रचार प्राउड का प्रचार प्रसार हो रहा है, और जो ये सैद्धांतिक पक्ष है ये अच्छी वाली बात है दादा, सबसे पहले तो इसी की जरूरत है। लेकिन मेरा कंसर्न यही है, मेरा पॉइंट भी ये है कि प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, तभी जाके ये सैद्धांतिक पक्ष को हम बता पाएंगे कि हाँ प्रैक्टिकल हमारा ये मॉडल है। हम जो बोलते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट, प्रोडक्शन फॉर कंजप्शन, लोकल इकोनॉमी, जो हमारा विलेज लेवल प्लानिंग बाबा ने भी दिए हैं और ब्लॉक लेवल प्लानिंग है, वहाँ से एक हम मॉडल खड़ा करें पूरा इंडिया में, कहीं भी किसी भी विलेज या
ब्लॉक से। आज से अगर हम स्टार्टअप ले, उसको ट्रेनिंग दे, जो भी हमारा वॉलंटियर्स है, प्राउटिस्ट है, वहाँ से शुरुआत करें कि एक गांव को सेल्फ सफिशिएंट बनाए। ये प्रैक्टिकल मॉडल हो ताकि हम कहीं भी जाए बोलने के लिए, प्राउड के लिए, कि हमारा ये देखिए सेल्फ सफिशिएंट है, जिसमें हमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की पूरी उसी जगह से हमारी भरपाई हो रही है। तभी जाके हमको लग रहा है कि ये हमारा आगे दोनों पक्ष को लेके आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू, वेरी धन्यवाद गुड दादा पॉइंट सभी दादा, को। आप बहुत सही बोले। और वही हमारे आचार्य जी भी बोल रहे थे कि जब हम बोलते हैं कि देखिए कितना लुभावना ये स्लोगन है, विच इज हम लोग बिलीव करते हैं कि सच है, दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 100% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार देना। ये कितनी बड़ी बात है। बट यदि हम उसको, जैसे दादा बता रहे थे, इस पर डिस्कशन हो, मंथन हो, सो दैट वी कैन मैथमेटिकली प्रूव इट कि दिस इज पॉसिबल, तब आप लोगों को बिल्कुल अपने साथ जोड़ सकते हैं। एंड दैट इज थ्रू कोऑपरेटिव ओनली पॉसिबल। तो सत्यनारायण दादा आपकी बात सही है। और मैं कुछ पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी। We will be concluding the session because we have just 5 minutes. So as we are talking, देखिए आज morality is missing, there is no doubt. So at least we can be a factory to create moralists. That is again a very important responsibility and capability Anand Marg is having, Prout is having, Sadvipra team is having, UPIF team is having. And unless today the main bottom line is morality, which is missing completely from the social life. So that is very important, and we can write from Prachar point of view, I'm saying right from the school, college, this also we can. Now, suppose अभी तो हमको प्रवृत्त मान लीजिए आने में देर है, तो we should choose a leader or we should propagate in mass that what kind of leadership, because देखिए leadership is the key. So we have to analyze what kind of leader we want. So we have to see this. A few of the points I have taken from Dr. Sohail Inaitullah's speech at international platform. So just आप अभी जो आपके लीडर हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनको just analyze करिए कि does leader or its policy क्या inequality को reduce करने की बात करता है? ऐसा करता है क्या? लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात करता है कि दान दे करके उनको संतुष्ट रख करके अगले इलेक्शन में उनसे वोट लेना चाहता है? So what kind of leaders we are, I mean, choosing today? आज क्या वो आज का जो नेता है वो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, यहाँ तक कि ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है कि भारत में मेजॉरिटी ऐसा एरिया है जहाँ लोगों के पास पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, which is I mean, bare minimum requirements. इलेक्ट्रिसिटी है क्या, एनर्जी है क्या? तो क्या मैक्सिमम मिनिमम की जो हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे थे, ऐसा तो नहीं कि कोई खा के मर रहा है, कोई बात नहीं, बट कोई खाने बिना भी मर रहा है क्या? यदि हमारा लीडर या उसकी पॉलिसी वो क्या लोगों के कैरियर के बारे में, लोगों के लाइफ के बारे में क्या सीरियस है? या क्या, जैसे हम लोग बात की 70% लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो क्या हम एग्रीकल्चर पॉलिसी को वरीयता दे रहे हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ दोज पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन दैट? सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, सो लीडर, आई मीन सोसाइटी को क्या वो जेंडर हेजेमोनी की तरफ से, जेंडर रेस्पेक्ट एंड जेंडर कोऑपरेशन की तरफ अपना विचार रखता है क्या? समाज को मोड़ना चाहता है क्या? क्या वो कंपटीशन के अलावा, जिसको आज हम लोग डार्विनिज्म बात करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं कैपिटलिज्म में, क्या वो कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन की तरफ समाज को ले जाना चाहता है क्या? क्या आत्मसुख तत्व से प्रौद्ध के सर्व समाज तत्व की तरफ समाज को ले जाने की उसकी मनसा है क्या? So these are the qualities we should search leaders, which is absolutely missing today. That is why I am saying you can only create such leaders from among yourself. क्या वो मैटेरियलिज्म से लोगों को वेलबींग की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना चाहता है क्या? या पुराने तत्व, पुरातन बातें करता है कि हमारा देश जो है हवाई जहाज पता नहीं हजारों साल पहले क्या उड़न खटोला बना लिया था? या उसका माइंड रैशनैलिटी की बात करता है क्या? साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है क्या? नॉन डॉगमेटिक है क्या? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिव्स ह्यूमनिज्म। क्या मानवता के नाम पर न्यू ह्यूमनिज्म को भी मानता है क्या? सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रायोरिटी देता है क्या?
So these are the very important factors which can, unless these are there in our leaders and he guides all along, India can never be a developed country. जैसे हम 75 साल सपने देखें वैसे आने वाले 25 साल और देखेंगे. And first of thing what everybody feel, there should be a planning. पहले साल हम क्या करना चाहते हैं? What is my priority? Next year में यार 2-3 चीज हम क्या करना चाहते हैं? So that way we have to, poverty is a majority function. So we have to do such a way that at least हमारा जो जीना जो है, लोगों का जीना तो कम से कम विश्वासप्रद हो कि नहीं हम यहाँ पर स्वस्थ तरह से जी सकते हैं. Do you know what is our condition in malnutrition case? Worst. So does leaders use language of race, humanity? क्या वो किसी जाति या किसी क्या बोलते हैं रिलीजन के पक्ष में बात करता है या पूरा मानवता की बात करता है? Whether he divides and favor one over others based on tendencies like religion, ethnicity, region, caste, creed, party. So we are looking for such kind of leadership, and then we need, first thing is to plan, and then only we can be a developed country, or we can hope to be the developed country. So with these words, I would like to conclude here. Can I request Acharya Dilip Dada to conclude the session with your few words, please? Thank you. Dada, this your topic was thought-provoking, and what we are talking at macro level, and but we need to also understand micro level, small segment. That's why I was talking, which is very essential, and then only we will develop confidence. Once we have a confidence, we can go to the public. It's not, and whosoever knows that, we have a right of that. Suppose, just for example, we have 5-10 slogans. Each slogan has a meaning Baba has given. Yeah. How those slogans will be implemented, there has to be a foolproof plan. In the Proud system, Baba has given, when we are talking about at macro level, then how the population is to be ideally used, which you also have put up. I will give a small thing on that. The 60% population has to be dependent on farming. Agriculture is one part of it. Baba has given around 25 different sectors of farming, like agriculture, sericulture, horticulture. There are hundreds of branches are there, and fisheries and piggeries, and there are many things. Sericulture. Baba has in his speech he is giving around 25-30 things. Everything is farming. In the farming, those 25-30 sector, how many people can be engaged? So that is what we have to see first. Baba says 60%. Out of 60%, 15% for the agrico and 15% for the agro industries. So Baba has given, suppose in a block we have 2 lakh of people, then we have to think that how many people should be for agrico and industries, how many for the agrico industries. Then Baba says 10% people for the white collar job, 10% people for the business, 10% others. This is how Baba has given, and 30% remains for the farming. In the farming, we see that it is not that everyone will have has a farm. So there are out of 30%, around 10% people have a land, 20% are the laborers, those who will support these activities. So we have to see a very micro level planning. Suppose in a block, if there are 1 lakh people is there, then how these 1 lakh people are to be given job? So the Baba has given a framework. Baba has given examples. Baba has given the example of Bengal and Bihar. Mostly in his discourse, he has given 2 examples. Then he gives all kind of things which can be developed in a particular area. When he talks of Bengal, then he has given that what are the things which can be developed in Bihar or Bengal. Likewise, we have to see in each of the blocks, since we are talking about block level planning, this how that has to be developed. So if we are serious, we have to read the Baba's all discourses, and then we have to find the solution lies here. That is what is for the development. Is 20 years not required.
it is only 3 to 5 years time it will take to become a developed nation, in the sense, not in the sense of which the Western theory is, in the sense that everyone is contented, everyone has life, everything has for his life. So that has to come. For that, there are 5-10 people, those who have a knowledge, those who can contribute. They must sit together and make a plan. Then only Okay. things will happen. So with these things, Dada, over to you. हाँ, ठीक है दादा, हम समझ गए। तो ऐसा करते हैं कि फ्यूचर में एक दिन हम लोग अपने उस पे ही रखते हैं डिस्कशन, और आई थिंक इतना इंटरेस्टिंग है जो कि हमारा बेस है कि हम किस तरह से 100% लोगों को रोजगार देंगे। वो बात को एक साइड छोड़ देते हैं। एग्रीकल्चर पे जो हमारा 70% पॉपुलेशन को हम क्लेम कर रहे हैं कि दे विल बी, वी कैन गिव जॉब, विच इज वेरी मच पॉसिबल इन इंडिया, तो उसके लिए क्या करें? So let us have a discussion on this, Dada. Yeah. Siva Dada wants to say something. Yeah. Yes, Dada. Actually, we also have to discuss how to activate Margis to come on Proud platform. That is very important. How we can try to do that. Very good point. Yes, sir. So thank you very much, Dada. And let us, we are because the subject was, it seems very not juicy enough. So we have left with 11 people only from 17. So let us do a minute of meditation and close the session. Thank you. Join me, please. Thank you.